sounding intellectual by being slightly anti-India. And that somehow the mindset stepped in that it was synonymous with intellectualism. You had to be unorthodox, you had to be rebellious, out of the way, you had to sound little anti-national so that, and if you could grow a long beard, that it will supplement your persona. But I think that's very amazing. I've been saying this even for many years now, because I'm glad that now the NBF has taken up this cause. But when we there, I think 2008, when we had the much widely publicized this Amarnath land agitation, and this was one of the only channels possibly which was supporting the cause, the channel which was then being managed by Arnav. And even in those days, I always said that this is a mindset which has got in because of our legacy of carrying the hangover of feudal past. And it seems very fashionable talking like that, though it's not done even in the most advanced countries of the world. So once I narrated an anecdote soon after the 1965 war, when President Johnson had taken over in US, because Kennedy got assassinated in December 64. And there was a press briefing by the President. That was soon after the war was over between India and Pakistan. And as usual, the President was narrating how the so-called Kashmir issue needs to be resolved, this, that, and the will of the people, etc., etc. So we had a journalist, I'm sure the old-timers will remember Mr. Inderjeet, who later on became a member of parliament also. So he used to tell, he said he suddenly got up and he said, Mr. President, don't you think many of the American states have also become a part of the United States in a similar manner, acceded or taken over Atlanta, Georgia, etc., etc. So the President immediately lost his cool and he said, gentlemen, we don't open closed chapters. That is a closed chapter. But in the Indian media somehow it became fashionable to open the closed chapters and not let any chapter close down. So even if you had to discuss Kashmir, you had to discuss Northeast, you had to discuss it with a narrative which would appear as if India is at a gross fault or committing a sin by taking a position that it is taking. And I'm glad that this group of enlightened journalists have actually sought to change that narrative. It is no longer unfashionable to be a pro-Indian journalist or a pro-Indian thinker or a pro-Indian intellectual. So to my mind, I think in a single sentence, that is the biggest contribution of NBF to the cause of nation, to the society, and I wish them a good work in future, and healthy criticism of course is welcome because that offers us an opportunity for course correction. But criticism just because it is a part of the Lutyens' evening jargon may not have a long life. And I think gradually it's begun to realize, and sooner most of us realize, good for all of us. Thank you very much. Thank you very much for that address, Dr. Jiten Singh, and for gracing us with your presence. Could we once again have a round of applause for Dr. Singh? I would now like to invite Niranjan on stage to give us more details about our next very, very interesting session lined up at the NBF Conclave. Niranjan. Thank you for that. Up next is a panel on the future of measurement. You've heard of Bark and Beyond. We've had an extensive discussion this morning. Measurement is a key index for the efficacy of the news television industry in the country. It forms the basis for advertisers, some of whom were on stage a few minutes back, to invest their monies in a news platform. Considered how the system itself has come under scrutiny in the past, its evolution and revision rests in the hands of the able few. Here's a short audio visual on what you can expect from the next panel.
तो फ्यूचर ऑफ न्यूज नेशनल कॉन्क्लेव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें नेटवर्क 10 भी शामिल है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने अराजकता और गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए जो कोशिश शुरू की, उसका ही नतीजा है कि आज कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले अपराधी खौफ में है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश और दुनिया के लिए नजीर बन गई है। कानून का राज कायम करने के लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए, जिसमें लखनऊ में प्रदेश की पहली पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाना अहम है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 6000 करोड़ का बजट जारी किया गया। वहीं 3000 करोड़ से डायल 112 को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया है। इतना ही नहीं, 18 साइबर थाने बनाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा भी योगी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला हेल्प डेस्क, 79 महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्र को थाने का दर्जा, 3 महिला पीएसी बटालियन बनाई है। ड्रग और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए ये NBF बनाई है। कानून व्यवस्था को लेकर की जा रही कार्रवाई से राज्य में हत्या के केस कम हुए हैं। चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगा है। महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों में भी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों में कानून का डर है। अब कानून का राज होने से निवेश के लिए उत्तर प्रदेश लोगों का पसंदीदा राज्य बन गया है। सर्वोकॉन सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम। सोलर से पोल्यूशन हटाओ, खुद की बिजली बनाओ, पावर कट और बिजली के बिल से मुक्ति पाओ। सर्वोकॉन सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और UPS। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल। अप्पा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांभर बनाकर रखो। अब इतनी जल्दी सांभर कैसे बनाऊं? और सांभर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांभर मसाला डालिए, टेस्टी सांभर तैयार। बहुत ही आसान और टेस्टी भी। MDH सांभर मसाला। अब सांभर बनाना बहुत आसान। मसाले सच सच MDH। अंग अंग बाजे मृदंग में अवचित ही शर्माऊं, महालया के दर्पण में सदियों की याद पाऊं, सदियों। This Diwali, celebrate the grace and glory with Mahalaya, a collection inspired by the royal heritage of Maharashtra. Reliance Jewels. देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की